Okay, so standard enthalpy of solution is our today's topic. Standard enthalpy of solution can be defined as, first of all, definition, amount of energy absorbed or released when 1 mole of ionic compound is dissolved in excess of water at RTP. Amount of energy absorbed or released. इसका मतलब क्या है absorbed और released का? Absorbed, release. इसका मतलब this can be endothermic or exothermic, both, depending on the type of substance. अब फर्स्ट करो x plus मैं solution की equation को xy solid turning into x plus aqueous and y minus aqueous को भी लिख सकता हूँ, or I can write xy solid xy aqueous. It's totally up to me. It's my choice to write however. Chalo. Acha, there are few things which are very important with respect to solution enthalpy. Remember, if the value of solution enthalpy is plus 15 kilojoule say any number in negative, मतलब 15 किलोजूल से ज्यादा एंडोथर्मिक ना हो, और यहां से एनी नंबर इन नेगेटिव, यानी जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हो, द कंपाउंड is considered to be soluble and if this value exceeds above 15 kilojoule per mole, above, more than that, the compound is insoluble in water. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, because you will have to apply when examiner asks you something like this. अच्छा जी. Now, when you add any ionic compound in water,
anything, if you're adding it in water, let's suppose it is xy. So xy gets separated. ऊपर करते हैं ये आज भी लैग हो रही Izan, is that clear? सही है. Atim is saying it's okay. It's fine. Okay. When xy is added in water, it splits up into x plus and y minus ion. So during this process, xy turning into x plus and y minus, both things are happening. First, bond breaking. The force of attraction between the ions that is x plus and y minus is overcome, right? The force of attraction between x plus and y minus is overcome with the energy available with water. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो x और y के दरमियान है ओवरकम कर ली जाएगी यूजिंग द एनर्जी विच इज अवेलेबल विद वाटर. वाटर रूम टेम्परेचर पे है RTP पर, तो इसके पास लाइक अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी अवेलेबल है जो इसको लिक्विड स्टेट में रखी. दैट एनर्जी इज यूज्ड टू सेपरेट दीज आयंस. ये इस इन आयंस को सेपरेट कर रहे हैं. तो ये तो हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस. And at the same time, these ions, X is making bonds with water's oxygen, partial negative oxygen. There are attractive forces between O partial negative and X plus. These attractive forces are actually called ion dipole bonds. So these are the new bonds that are formed. इस फेस को या एक्वस एक्स प्लस को बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं. Bond breaking and bond making both are happening. If bond breaking is consuming more and making is releasing less, the solution enthalpy will be endothermic. If breaking is consuming less, making is releasing more, then it will be an exothermic process. I repeat. Now, let me write it also so that if breaking
absorbs more energy than energy released in making. The process will be endothermic, and vice versa. If breaking absorbs less compared to energy released, then process will be exothermic. अब ये बात मैं जानता हूं कि एंडोथर्मिक है, तो +15 से ज्यादा एंडोथर्मिक हुआ तो compound will not be soluble in water, because water molecule will not be having that much energy available. Is that making sense? दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो. हमने क्या कहा कि if substance has to be soluble, it should have solution enthalpy +15 kilojoule to any number in negative. That means if it is exothermic, then if it is exothermic, the compound is easily soluble. And if it is slightly endothermic, even then it is soluble. But if it is endothermic, having enthalpy more than 15 kilojoule per mole required, then it will be insoluble. अब relate करो इस बात से. Breaking absorb less, तो ये वो एनर्जी है ब्रेकिंग के लिए जो प्रोवाइड की जा रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है. Water molecule liquid state में must possess some energy with them. This energy is used to break lattice of ionic compound. When the lattice is broken, now these ions are exposed with water molecule, producing ion dipole bond, not only in case of cation, but in case of anion as well. See, ये भी ion dipoles हैं. Solution enthalpy can go both ways. For example, अच्छा अब एक चीज पूछता हूँ. Do you know any compound that is insoluble in water? नाम बताओ मुझे माइक खोल के. कोई भी बच्चा. If you know any compound that is insoluble in water, anyone? I can't hear anyone's voice. I think I'm trying to say something, but the voice is not transferred to me. कोई और बच्चा? अच्छा चलो चैट बॉक्स में लिखते हैं. Any compound that is potassium chloride is highly soluble. Group 1 के तमाम तर compound soluble होते हैं. हतीम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है. तो सोल्यूशन एंथैल्पी में हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं. मैं भी आपसे आयनिक कंपाउंड ही बात कर रहा हूँ.
Shabash Amna and Shabash Ahmad Iqbal. Monoam, all nitrates are soluble, and rubidium is also from group 1, so that is soluble as well. कैल्शियम कार्बोनेट ले लें. ओके ठीक है, जैसे मुजम्मिल भाई कहते हैं वैसे उनकी बात माननी पड़ेगी. पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 के तमाम तर कंपाउंड सॉल्युबल है, मेक श्योर. अब जरा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करते हैं, इट शुड स्प्लिट अप इनटू इट्स आयंस, बट इसकी डेल्टा एच सोल्यूशन is plus 100 kilojoule per mole. Oh my god. If it is 100 kilojoule per mole, that means this should be insoluble in water at RTP. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं किसी और बेरियम सल्फेट, इसको डिसॉल्व करने, इनकी सॉल्युबिलिटी देखो, इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है, मतलब if you look at the 10 raised to the power minus 10 mole square dm या mole per dm cube, इतना सा डिसॉल्व होता है if you add 1 mole of it. 10 raised to the power minus 10, इतना कम डिसॉल्व हो रहा है. सिमिलरली बेरियम सल्फेट, बेरियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, इसकी सोल्यूशन एंथैल्पी बी माइनस प्लस 200 किलोजूल. ये एक रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं जस्ट टू मेक यू रियलाइज इफ समथिंग इज इनसॉल्युबल, यू कैन ईदर लर्न दैट डेटा कि कौन से सॉल्युबल होते हैं, वो जो तुम्हें 5 पॉइंट सॉल्युबिलिटी के याद करवाए जाते हैं. किसी को याद है वो 5 पॉइंट सॉल्युबिलिटी के? सही, यस और नो? वो लेवल्स में याद कराए गए होंगे ना सॉल्युबिलिटी के पॉइंट्स, किसी को याद है? कोई एक बच्चा क्लास का? शाबाश आमना. आमना बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे? हाँ, पहला क्या था? ऑल नाइट्रेट्स आर soluble. ठीक है. दूसरा क्या था? ऑल सल्फेट्स आर soluble except calcium, strontium, barium and lead. ठीक है, एक मिनट रुको नवीद, एक मिनट रुको. ऑल हैलाइड्स आर soluble except silver, mercury and lead. All hydroxides are insoluble except group 1 and group 2. And last, all carbonates are insoluble except group 1 and ammonia. ये 5 पॉइंट्स है सॉल्युबिलिटी के जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को कवर करेंगे. ठीक है बच्चों, अपने पास याद रखना. ग्रुप 1 के तमाम तर सॉल्ट सॉल्युबल है, एब्सोल्युटली. यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 आर सॉल्युबल. अब इस तरह से तुम याद कर लो ये 5 पॉइंट जो तुमने जिस तरह याद किया. आई डोंट नो कि तुमने किस तरह से याद करवाए गए, तुम्हें ओ लेवल्स के अंदर किस तरह रट्टा लगवाया गया, लेकिन ये 5 पॉइंट तुम्हें याद होते ना तो तुम कभी भी सॉल्ट्स के अंदर फंसते नहीं. All nitrates are soluble, all sulfates are soluble except calcium, strontium, barium, lead. All halides are halides मतलब chloride, bromide, iodide. They are soluble except silver, mercury and lead.
all hydroxides are insoluble except for group 1 and group 2 and ammonium, अगर यहाँ लिख लें तो कोई बुरी बात नहीं. All carbonates are insoluble except group 1 and ammonia. Is that making sense? Please response करना chat box में. सब बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए. इतने 28 बच्चे बैठे हैं और 27 बच्चे और रिस्पॉन्सेस 5 बच्चों के आते हैं. दिल चाहते हैं कि बस जितने भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उन सब की सोल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और 15 से ज्यादा होगी. इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए. ठीक है. जैनब जरा अटेंडेंस ले लेना. समाना, जैनब. ओके. ना बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं. सोल्यूशन एंथैल्पी तो मेरे दिमाग में आ गई. सोल्यूशन एंथैल्पी का मतलब डिसॉल्व होने वाली एंथैल्पी, डिसॉल्व करने के बाद मिलने वाली एंथैल्पी, वो भी अगर डिसॉल्व हो रहा है तो मिलने वाली एंथैल्पी, अगर डिसॉल्व नहीं भी हो रहा तो क्या एंथैल्पी होनी चाहिए. ये तमाम चीजें मैंने अब तक के डिस्कशन के अंदर सीखी है. ठीक है. सेकंड जो मेरे पास आज की डेफिनेशन, अभी इसको यूज करेंगे सोल्यूशन एंथैल्पी को. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. अब इन दोनों को मिलाएंगे. इन दोनों को मिलाएंगे. पहले हाइड्रेशन. हाइड्रेशन किसे कहते हैं? सराउंडिंग को. तो सर क्या इसमें भी तो सराउंडिंग हो रही थी? हाँ, ये भी हाइड्रेशन ही है एक तरह से. ये भी हाइड्रेशन है लेकिन ये सॉलिड से एक्वस की हाइड्रेशन है. अब हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, स्टैंडर्डली हाइड्रेशन किसे कहते हैं? डेल्टा एच हाइड्रेशन amount of energy released. That means it is always exothermic. Amount of energy released when 1 mole of gaseous ion is dissolved in excess of water. 1 mole of what? Ion, gaseous ion का होना जरूरी है. ठीक है. Dissolved in excess of water at RTP. वो कंडीशन वही है. स्टैंडर्ड होने के लिए कंडीशन RTP है. Focusing 1 mole of gaseous ion. ठीक है. एक्सेस ऑफ वाटर, ये ना हो कि आयन के जाने से वाटर एवेपोरेट हो जाए. एक्सेस ऑफ वाटर ये कि वो वाटर एवेपोरेट ना हो. ना इसका मतलब है फर्स्ट करो सोडियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी मुझे चाहिए. I am now 100% sure that this should be exothermic. ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक ही होगा फॉर श्योर. दो रीजन है इसके पीछे. एक तो पहले देखो गैसियस फेज से एक्वस फेज, गैसियस फेज से एक्वस फेज में जब भी जाएंगे या गैसियस फेज से लिक्विड फेज में जब भी जाएंगे प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होगा. कुछ ना भी हो, कोई केमिकल प्रोसेस ना भी हो, स्टेट कन्वर्जन ही अगर देख लो तो ये हीट को रिलीज करेगी. अच्छा. अच्छा, तमाम आयंस को, पोटेशियम को देख लेते हैं. के प्लस गैस turn into K plus aqueous, delta H negative, chloride gas.
अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है मेरे पास, माइनस नेगेटिव, चाहे कैटाइन हो एनाइन हो, without any discrimination this is turning into aqueous and releasing energy. But here you have to wait. There are few ions जैसे oxide 2 minus. Examiner question पूछता है why it is impossible to find out standard enthalpy of hydration of oxide ion. क्या पूछा है? Why it is impossible, मतलब इसको फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि यूं कह लो, चलो एग्जामिनर फाइंड तो कर सकते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, फाइंड हमने कर ही लिया. Why it is difficult to find standard enthalpy of hydration of oxide ion. तो ये स्ट्रेट अवे एक मार्क का रीजन है. अच्छा, मैं तुम्हें कई दफा कह चुका हूँ, एक मार्क के क्वेश्चंस लाइक दे आर किलिंग क्वेश्चंस. इसकी हाइड्रेशन लेना क्यों? अब फर्स्ट करो, वंस आई dissolve this in water, that means I'm adding this to water. This was not reacting with water, this was remaining in the same shape, sodium ion and sodium ion, but only the phase is getting changed. Potassium ion gaseous, potassium ion aqueous, only the phase is getting changed. When I add oxide ion in water, it reacts to form hydroxide. ये क्या बन जाता है? Hydroxide ion बन जाता है. And once it reacts with water, it is impossible. अगर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड गैस, ऑक्साइड एक्वस आयन में कन्वर्ट होता, तब मुझे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी. If it is reacting with water, I am unable to find out its hydration enthalpy. So एक आयन ऑक्साइड का है, दूसरा नाइट्राइड का है, ये अमोनिया बना लेता है NH3. एग्जामिनर ने बहरहाल सवाल ऑक्साइड आयन का पूछा कि ऑक्साइड आयन वंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. अच्छा, सल्फाइड आयन है. सल्फाइड आयन भी कुछ सिनारियोज में कुछ ऑथर्स लिखते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है. तुम ऑक्साइड और नाइट्राइड आयन को याद रखो. इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को फाइंड करना डिफिकल्ट है. क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर. They will not remain in form of their actual ion. And once they react, you will not be able to find out hydration enthalpy. So, the meeting link expire hone laga hai. I'm sending you another meeting link. So see you in 5 minutes. 3 minutes.